Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to give the marks distribution for ICSE Class 10 Mathematics paper for the year 2024-25 based on the specimen paper. At the same time, we will also discuss some important points related with your paper. It means paper analysis also. As you know, the pattern of paper remains same like the previous year. 15 MCQ, question number 2 of 12 mark, question number 3 of 13 mark, total 40 marks for section A, and in section B out of 7 questions you need to attempt only 4 questions. So starting with Unit 1, which is Commercial Mathematics, GST is carrying 1 MCQ and then 4 marker question in question number 6 in section B. So total 5 marks from GST. Next is Banking, 1 MCQ is there, 1 3 marker question in the place of question number 5. So 4 marks from Banking. Then और बैंकिंग में भी इस बार कुछ नए क्वालिफाइंग सम जैसे टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है. नेक्स्ट इज शेयर एंड डिविडेंड, जिसमें 1 एमसीक्यू देन 3 मार्कर क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 4. सो टोटल 4 मार्क्स फ्रॉम शेयर्स एंड डिविडेंड. सो टोटल मार्क्स ऑफ दिस यूनिट कमर्शियल मैथमेटिक्स इज 13, which is more than the previous year. It means 9 marks in the previous year and then 13 marks. So marks related with this unit have increased in this term. So next is algebra, linear inequation. 1 MCQ is there, 1 3 marker question in question number 4, then total 4 marks from linear inequation. Quadratic equation, 1 MCQ is there, 1 4 marker question in question number 9. So total 5 marks from quadratic equation. Solving problems based on quadratic equation, 1 3 marker question in question number 10. Separate is there. So total quadratic equation and word problems total carry more marks this year. Now proportion, 1 MCQ is there, 1 3 marker question in question number 8. Total 4 marks from ratio and proportion. Then remainder and factor theorem, 1 MCQ is there, 1 4 marker question in question number 2 means compulsory section is there. So total 5 marks from remainder factor theorem. Matrices, 1 MCQ is there, 1 3 marker question in question number 10. Total 4 marks. AP arithmetic progression, 1 3 marker question in question number 9. So total 3 marks from AP. And then geometric progression, 1 4 marker question in question number 3 compulsory section. Total 4 marks from this chapter also. So total marks of this unit algebra is 32, which is 2 mark more than the previous year, which was 30. Next is coordinate geometry, reflection, carrying 5 mark in section A question number 3. So total marks related with this chapter is 5. Section and midpoint formula and equation of a line. Mixed questions are there. 1 MCQ from equation of a line and then 4 marker question from section and midpoint formula and equation of a line. As you know, these chapters make combined questions there. And next also 1 3 marker question based on both these two chapters together in question number 6. It is again carrying 3 marks. So total this unit is carrying 8 mark. So 5 in reflection and then 8 is section and midpoint formula and equation of a line. So coordinate geometry is carrying 13 marks, which is 2 less than the previous year, which was 15 earlier. Now geometry, similarity, 1 MCQ is there. And then one major change which I want to discuss with you is similarity ka question is mixed with circles question. So for the solution of this question, you should have the knowledge of similarity chapter as well as theorems of circle also. So similarity and circle का यहाँ पर आपको 3 marks का question दिया गया है सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर. इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, तो सिमिलैरिटी टोटल आपकी 4 मार्क्स की हो जाएगी. लोसाई इज कैरिंग 4 मार्क, बट लोसाई का क्वेश्चन एज यूजुअल कंस्ट्रक्शन के साथ ही है. तो लोसाई और कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन तो हम मिक्स एक्सपेक्ट ही करते हैं, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन के साथ मिक्स होकर 4 मार्क का आ रहा है इन क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट इज सर्कल्स, आपका एक इंडिविजुअल 4 मार्क कैरी कर रहा है. इसके अलावा सर्कल्स एंड टेंजेंट मिक्स आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कैरी कर रहा है. From tangents, 1 MCQ is also there. So total marks related with this unit from similarity 4, from loci and construction, from circles and tangents 4 and 4. It means total 16 marks from this unit geometry, which is less than the previous year because last year it was of 21 marks. Now mensuration, it means cylinder, cone, sphere. 1 MCQ is there, 1 4 marker question in compulsory section in question number 3, 1 4 marker question in question number 8 and then 3 marker question in question number 9 also. So total marks 12 from this unit. ये भी हमारे बढ़ गए हैं. Last year it was of 9 marks and now it is of 12 marks. So ये increase हुआ है. Now trigonometry unit, trigonometrical identities, 1 4 marker question in section B question number 4 is there.
So total 4 marks from this chapter. Now heights and distance, one MCQ is there and one 5 marker question is also there. So total 4 plus 6, it means 10 marks from this unit which is trigonometry and which is same as the previous year. ये इकलौता चैप्टर है जिसके मार्क्स सेम रहे हैं हमारे लास्ट ईयर वाले. Now coming to unit statistics, so mean, median, mode, drawing histogram, drawing ogive, one MCQ is there, one 4 marker question in question number 5, one 5 marker question in question number 7 is also there. So total 10 marks from this mean, median, mode, histogram, ogive. And probability, one MCQ is there, one 3 marker question in question number 8 is also there. So total 4 marks from probability. So 10 plus 4, 14 marks from probability, which is 2 less than the previous year because earlier it was of 16 marks. तो आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जो कि अभी भी हम पेपर में एक्सपेक्ट करेंगे, बट आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कौन सा यूनिट आपने कितने मार्क्स के लिए करना है और क्वेश्चंस की मिक्सिंग कैसे हो रही है. दिस इज द सम ऑफ योर 110 मार्क्स पेपर. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये 110 मार्क्स का क्यों है, क्योंकि आपके सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो आपको वहां पर चॉइस दी जाती है ताकि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाए. फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है. सो यहाँ पर आपके पास ये सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया और कुछ चीजें जो इसके अंदर आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि चैप्टर्स की मिक्सिंग भी हो रही है. वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन अलॉन्ग विद सर्कल एंड टेंजेंट की हाँ मिक्सिंग हो सकती है, लोसाई और कंस्ट्रक्शन मिक्सिंग हो सकती है, बट इस बार सिमिलैरिटी और सर्कल्स की मिक्सिंग की गई है. तो आप इस तरह की मिक्सिंग अपने फाइनल पेपर के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो आपकी प्रिपरेशन के टाइम ये चीजें ध्यान रखिए कि कोई 2 चैप्टर्स मिक्स होके भी आ सकते हैं आपके पास. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel and best of luck for your maths paper preparation.